Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. भाई वाह, स्वयं सेवक हो तो ऐसे अपने कार्य के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति दृढ़ निष्ठा हो तो ऐसी, कुछ ऐसी ही मूल्य निष्ठा के साथ बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था की विविध महिला प्रवृत्तियों के द्वारा नारी शक्ति भी जागृत हुई है। और आज प्रमुख स्वामी महाराज नगर के नारी उत्कर्ष मंडपम में बीएपीएस की अनेक महिला प्रवृत्तियों में से एक ऐसी बालिका प्रवृत्ति पर विशेष प्रतिपादन हुआ है और साथ ही साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी हुई है। तो चले नारी उत्कर्ष मंडपम की मुलाकात हम भी लेते हैं। અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એ માહોલ આપ્યો છે બાલિકા પ્રવૃત્તિ દ્વારા બાલિકાઓ માટે, કારણ કે આજે હું બાલિકાઓની વાત કરવા જઈ રહી છું। 65,000થી પણ વધુ દેશ વિદેશમાં સત્સંગ કેન્દ્રો બાલિકાઓના ચાલી રહ્યા છે, જેમાં 1.5 થી 2 લાખ જેટલી બાલિકાઓનું જીવન ઘડતર થઈ રહ્યું છે। અઠવાડિક બાર સભા તો થાય જ છે, પણ સાથે સાથે વિવિધ ઓડિયો વિડીયો પ્રકાશનો, ગુજરાતી અંગ્રેજી માધ્યમના પ્રકાશનો, સામાહિકો અને એટલું જ નહીં પરંતુ આજે ટેકનોલોજીના યુગમાં kidsbap's.org નામની વેબસાઇટ પરથી પણ બાળકોને સંસ્કાર સાથે જીવન ઘડતર કરવામાં આવે છે। પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બાલિકાઓ માટે સ્કૂલોની પણ સ્થાપના કરી છે। આ બાલિકા પ્રવૃત્તિ મુખ્ય 5 S પર કામ કરી રહી છે: સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય અને સ્વવિકાસ। આ 5 S જો બાળકમાં હશે તો એ બાળક ક્યાંય પાછો નહીં પડી શકે અને એનું જીવન ઘડતર અને વિકાસ સારામાં સારો થઈ શકે છે। બીજાના હિતમાં આપણું હિત છે, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ છે, એ જ હંમેશા એમનો સંકલ્પ રહ્યો છે ને એ જ સેવાભાવથી એ હંમેશા લોકોની સેવા કરતા આવ્યા છે। એમનું હૃદય તો એક આમ માતૃ હૃદય જેવું છે। દરેક લોકોની, નાના બાળકથી માંડીને વૃદ્ધ સુધીના દરેક લોકોની એ જ સેવાભાવથી, એ જ લાગણીથી હંમેશા ધ્યાન રાખતા હોય છે। અને એટલા માટે થઈને જ આજે સમગ્ર સમાજ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાહેબના જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવને ઉજવવા માટે થઈને અહીંયા હાજર થઈ ગયો છે। ખૂબ રંગે ચંગે, ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો આ મહોત્સવને ઉજવવા માટે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાહેબના જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવની ઋણ ચૂકવવા માટે થઈને અહીંયા દરેક લોકો પોતાનું શ્રમદાન આપી રહ્યા છે। વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવનાથી એમણે દરેક સમાજના દરેક લોકોને સાથે જોડ્યા છે। કોઈ જ્ઞાતિભાવ નહીં, કોઈ ભેદભાવ નહીં, કોઈ જાતિભાવ નહીં, દરેક લોકો મારા લોકો છે। એ વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના જો કોઈ લાવ્યું હોય ને તો એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાહેબ લાવ્યા છે। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति प्रथम से ही उत्सव प्रिय संस्कृति रही है। कहा गया है कि उत्सव प्रियाः खलु मानवाः, इसलिए भारत में प्रतिवर्ष कई 100 प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। परंतु यह उत्सव जो आज अहमदाबाद की भूमि पर मनाया जा रहा है उसकी तो बात ही कुछ अलग है। दरअसल प्रमुख स्वामी जी महाराज की बात भी कुछ अलग थी। प्रमुख स्वामी महाराज को एक बार भी मिलने वाला कोई उनको भूल ही नहीं पाता था।
उनके जन्म शताब्दी अवसर पर उनमें से कई महानुभाव यहां उपस्थित है। आइए सुनते हैं प्रमुख स्वामी महाराज की और प्रमुख स्वामी महाराज के नगर की महिमा ऐसे ही महानुभावों के मुख से जो आज प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी अवसर पर यहां उपस्थित है। Here is some Indian standard, what we call more often as the Swaminarayan standard, to present any theme, any value, any message with more precision and perfection. वो हमने कई बार अनुभव किए थे। ये एक अद्भुत नगरी का निर्माण यहाँ पर किए थे और वो भी erasing the barriers between the permanency and the temporary stuff. So they are not a temporary thing just to see, listen to, enjoy and then leave them. You have to make them permanently engraved in the hearts. A volunteer-based organization to create something of this size and scale is extremely impressive, and without the blessings of the divine, it's just not possible. I am Shiv Kumar. I head the Times of India group as the chairman of the executive committee. And the whole thing is about experience, and it is not some kind of preaching, but allowing people to experience the kind of life one needs to live. And it also kind of summarizes the life of Pramukh Swami Maharaj. And it is actually the quest. And whatever may be your quest, whatever may be your thirst, and that gets fulfilled by just experiencing the offerings at this place. You can look at it, people go to the Louvre Museum and look at Mona Lisa saying the eyes are looking at me. Look at the eyes here. This is Bawa Jain. I come from the United States of America, based in New York and in Florida. I serve as the founding Secretary General for the World Council of Religious Leaders. And basically, I'm the person who had the honor of bringing Bapa for the first and only time to the United Nations in the year 2000. हमारा गुरु योगी जी महाराज पर कहता कि भगवान સર્વનું ભલું કરો, એમાં કોઈ નાત જાત ભેદ નહીં, દરેક ધર્મના કોઈ પણ મનુષ્યનું સારું થાય, ભલું થાય એ હંમેશા ઈચ્છતા અને એ રીતે પોતે એમના વર્તનમાં પણ અમને જોવા મળ્યું છે. I come obviously from the media world, and I also most of the work in the commercial organization is conditional. I give something, what is that I get in return? But organizations like this, volunteer-based organization, is selfless service. There has to be something from within, and that all are the power, that the divine blessings, obviously right from the Pramukh Swami Maharaj and Mahant Swami Maharaj, and the kind of experience when an individual gets. So it is volitional, and anything to be volitional has to be from within, and it cannot be imposed off, because there is no give and take. It's only give. ये भारत की आत्मा है। इस स्वामीनारायण की कृपा से हर एक संत, हर एक सेवक, हर एक वॉलंटियर में इसका दर्शन कर सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें कि ये मॉडल बन जाए दुनिया अच्छे परिवर्तन के लिए। So you feel Bapa's stamp, Bapa's presence in everything that you see here. In everything. I mean, look at the grand statue of Bapa. For me, in everything that I see and do, everybody see, I see Pramukh Swami. That's what I learned from him. So when I see Mahant Swamiji Maharaj, it's no different. Prime Minister Modi said it best. You just want to be in Bapa's presence. This is not the culmination of the celebration of the centenary of Bapa. This is the starting point. This is the opening of a new gateway. A gateway which will have major global impact. You mark my words, you see what will happen. सचमुच प्रमुख स्वामी महाराज एक ऐसे विरल संत थे जिनके बारे में कितना भी कहा जाए कम ही लगता है। उनके जन्म शताब्दी अवसर पर आज एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ जिसका विषय था द रोल ऑफ सेंट्स इन द एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण में संतों का योगदान। तो आइए उस कॉन्फ्रेंस का हम भी हिस्सा बनते हैं।
प्रमुख स्वामी महाराज जो है उनका जो सोशल कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो अपने पूरे जीवन में जो पूरे देश का भ्रमण किया, दलित बस्तियों में गए, ट्राइबल बस्तियों में गए, ट्राइबल इलाकों में गए और उन्होंने बड़े प्रेम भाव से सबको समझा और सबके लिए जो उन्होंने काम किया। मेरा ये मानना है कि अगर कोई संप्रदाय और समाज कार्य कर सकता है तो एकमात्र स्वामीनारायण है जिसको सही रूप में भारतवर्ष में समरसता की स्थापना कर सकता है। मंदिर में आने वाले किसी भी व्यक्ति का वर्ण नहीं पूछा जाता है कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, किस गोत्र के हो, किस वर्ण के हो। सबके लिए मंदिर का द्वार खुला है, सबको प्रसाद मिलता है। स्वामी जी महाराज, श्री जी महाराज ने आज से 200-250 साल पहले इसकी कल्पना कर ली थी कि अगर अभी से हम नहीं करेंगे, अगर श्री जी महाराज नहीं होते तो आज भारतवर्ष अनेक टुकड़ों में बंट चुका होता। यह निश्चित बात है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति हमेशा समरसता की संस्कृति रही है। हम भगवान के भक्त हैं तो देखिए श्रीमद् भगवद गीता भगवान के प्रिय भक्त का लक्षण सुनाती है। 12वें अध्याय में 13वां श्लोक है भक्त के लक्षण। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एवच। अब जब मैं बात करता हूँ कि मैं भगवान का भक्त हूँ तो मुझे पहले सोचना चाहिए मैं अद्वेष्टा हूँ या नहीं। और अद्वेष्टा अपने परिवार के लिए नहीं है, अपने संप्रदाय के लिए नहीं। भगवद गीता स्पष्ट है अपने आप में, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। हम इतनी 1000 कॉन्फ्रेंस करें तो प्रश्नों को समझ सकेंगे, बदलाव नहीं आएगा। बदलाव जीवन में परिवर्तन से आता है। प्रमुख स्वामी जी का ऐसा एक जीवन कि सबको समरस बना दिया। हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वामीनारायण संप्रदाय के निश्रा में पुनः एक बार समरसता की जो भाव गंगा बह रही है वो पूरे समाज को पवित्र बनाए, पूरे समाज को नवपल्लवित बनाए। इस दिशा में हम सब मिलकर अगर व्यवहार में लाएंगे तो पूजनीय प्रमुख स्वामी महाराज ने जो सपना देखा था समरस समाज का, वो सपना साकार हो। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.